but you should know कि Dell computer is something all of you are familiar with. So I have brought the case study of Dell computer today. One second. I'm opening the case. Can you see the PowerPoint? Open. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Just 1 second. Give me 1 second. और खुल गया है. Can you see this case study, Dell Computers SCM, Supply Chain Management? हाँ, आप इसको स्क्रीन वो फर्स्ट जो आपका ओपन हुआ है ना स्क्रीन वो बंद करें, फिर हो सकता है कि वो आपके लैपटॉप पे खुला हो. ये वो तो हमने बंद कर दिया जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला. नहीं, आपका ये फोल्डर खुला हुआ है, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खुला एक्चुअली दिख रहा है यहाँ पे. अच्छा. हाँ, वो बंद करें आप. हाँ, अब केवल वो पीपीटी खोलें आप. शेयर स्क्रीन में करके करें. शेयर स्क्रीन में मैंने आपको दिया हुआ है. हाँ हाँ, आप ठीक है मैम, आ गया. Today we'll be doing this case study of Dell Computers Supply Chain Management. एंड गाइस प्लीज पार्टिसिपेट. अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैम से रोक के पूछना है, बिकॉज ये केस स्टडी है. केस स्टडी का मतलब है कि आप दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. मैम तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करेंगी, बट आपको कहीं लग रहा है कि कोई नया आइडिया है, कोई और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेहिचक आप अपने विचार देने से रुके नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बात करोगे तो सीखोगे. केस स्टडी है, जैसे हम दो तरह के चीज होते हैं. Either it is a case study. Case study means you are doing an in-depth study of one. या तो तुम सिमिलर जैसे डेल कंप्यूटर है, एचपी है, जितने भी कंप्यूटर सेल कर रहे हैं उनको अलग अलग भी पढ़ सकते हो. बट केस स्टडी मीन्स यू आर in-depth study of only one organization. That is the difference. So you know कि Dell has been practicing this direct build to order. उसको ऑर्डर मिला और वो उसको बना के अपने सप्लाई कस्टमर को दे दिया. The focus of this case study is the supply chain management practices of Dell. Dell has been following its unique direct build to order sales model for more than 20 years.
84 में स्टार्ट हुआ था, more than 20 years. Customers can plan their own configuration and place orders directly with the company via the phone or its website. So this is one of the leading PC personal computer manufacturers in the world, and they have pioneered this unique model of selling directly to the consumers. और रिटेलर को वो बाईपास कर देते हैं. जैसे सप्लाई चेन में मेनली तो हम लोग देखते हैं ना कि मैन्युफैक्चरर के बाद वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाता है. तो यहाँ थोड़ा सा ये करते हैं कि आप सीधे कंपनी को अप्रोच करें और कंपनी सीधे आपको बेचेगा. This is known as the direct model. इसलिए ये यूनिक है, डेल का ये यूनिक है. It was started that time Michael Dell was only 19 years when he started this thing from his dormitory room at the university in 1984 with $1,000. मतलब कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुंच गए हैं आज. They are the world leaders now. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो होम ग्रोन स्टार्टअप था फ्लिपकार्ट, इट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय 2 इंडियन इंजीनियर्स, सचिन बंसल एंड विनी बंसल. उन लोगों ने भी स्टार्ट किया था अपने एक छोटे से घर से ही वहां बैंगलोर से. पर ये है कि आज वो दे आर नॉट देयर. फ्लिपकार्ट इज देयर, इट हैज बीन टेकन अप बाय वॉलमार्ट. Flipkart is there, but now it is Flipkart Walmart. अब वो कहीं नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है. तो ये डिफरेंस है उनका. Michael Dell had started it and even today they only are operating it. बहुत सारे बहुत सिंपल बिगनिंग से शुरू किए. डेल हो, HP ho, HP they had started. There were 2 engineers who had started this their venture from a garage. The company's headquarters is Round Rock, Texas, USA. Now, what is the challenge? Till 2006, they were the leadings. अगर कुछ problems आ गए and their position fell. In 2006, however, Dell faced several problems. Many customers complained about long delays in supplies. Recall Sony company जो Japan का है, they were supplying them the battery. So they recalled it. Recall of Sony battery cells in its laptops brought undesirable media hype to the company. Actually जानते हो जब कुछ गड़बड़ होता है तो मीडिया भी बहुत ज्यादा बात को उछालती है, कुछ बढ़ा चढ़ा के उछाल देती है. तो इससे the company reputation is affected. So sale is also affected. Increasing discontent of customers led to a slowdown in sales. Consequently, अब क्या हुआ कि पहले Dell was the leader, now HP became the leader. Dell lost its market leadership to the Hewlett Packard company, that is HP. Now, what were the reasons? क्यों ऐसा क्यों हुआ? Lack of new product. जो वो बना रहे थे, they were not doing any innovations जिसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये जो फील्ड है इट इज वेरी डायनामिक. न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग. आप ही देखिए एक मोबाइल ही खरीदिए, फिर थोड़े दिनों के बाद ये थोड़ी हो जाता है कि वो काम नहीं कर रहा है, बट यू वांट अ बेटर वर्जन, बेटर विथ मोबाइल विथ अ बेटर फीचर्स. तो इस फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में आईटी में दिस इज अ वेरी prominent thing which is playing the role
of making you the leader or your position following in the race. Lack of new product. This is according to the industry experts. Poor customer service. शायद उन लोग उस समय उतना ध्यान नहीं देने लगे क्योंकि डायरेक्ट बेच रहे थे और तो उतना ये नहीं कि हाँ उसको जल्दी से जल्दी बेचे, ये नहीं कर रहे थे. Increasing support cost, and support cost was also increasing. The cost of the computer was also, the laptop was also increasing. So because there is so much of competition, as I have told you earlier also, the objective is to minimize the cost and maximize the quality. आज उसी का डिमांड है. आखिर आज चाइनीज गुड्स इतना क्यों चल रहा है मार्केट में? वो उसको सस्ते में दे रहे हैं, क्वालिटी भी ऐसा कुछ खराब नहीं है. तो कंपैरेटिवली you see, if you are getting the same thing at a lower cost, the consumer will go for that. फिर lack of retail presence. रिटेल तो करते नहीं थे, तो डायरेक्ट करते थे. तो कोई ऐसे लेना चाहे रिटेलर से तो नहीं, तो ये सब चीजें they had started affecting their sales. So there were some limitations of direct model. अभी तक तो Dell was thinking the direct model was their company's strength, मगर उसकी जो चमक थी, शीन थी, it had started going down as their competitors gained better supply chain efficiency and opted for a mixed sales. but ये वो दोनों दे रहे थे, डायरेक्ट भी दे रहे थे और थ्रू रिटेलर भी दे रहे थे. हाँ, also due to the growth of innovative technologies and changes in the computer industry, the customer changed their needs. तो क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स, नए टेक्नोलॉजी आने लगे, तो कस्टमर्स भी उनको और कुछ ज्यादा अच्छा चाहिए था, और बेटर फीचर्स चाहिए था, और कन्वीनियंस चाहिए था. Customization was no longer crucial for them. क्योंकि कभी-कभी you don't know कि what actually you want. क्योंकि consumer is not all that educated, not everyone. कि आपको क्या actually चाहिए, वो अभी उसको आप बताइएगा, करवाइएगा, उससे अच्छा कि आपको बना बनाया कहीं ज्यादा अच्छा मिल रहा है. तो consumer started leaving them. पहले डेल का ओल्ड सप्लाई चेन क्या था? मेक टू ऑर्डर. जो भी आपको चाहिए आप उनको अप्लाई बताइए, वो वैसा बना के आपको दे देंगे. Using the direct model, Dell provided consumers with tailor-made products built only after procuring the order from them. इससे एक चीज, जैसे सप्लाई चेन में हमें हमेशा हम लोग कहते हैं ना, डिमांड और सप्लाई should be equal. जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो. ज्यादा करने से क्या होता है, यदि आपने बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया तो कुछ चीजें नहीं बिकेंगी. कम किया तो कुछ लोग will not be satisfied, you will not be able to satisfy. So this demand and supply equilibrium should be there. तो यहाँ ये बात तो हो रहा था, क्योंकि वो जब तक ऑर्डर नहीं मिलता था तब तक वो बनाना शुरू नहीं करते थे. मगर इससे क्या हुआ कि जो ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, वो ऐसे कस्टमर्स उनके हाथ से निकल जा रहे थे. तो इस प्रोसेस से इन्वेंट्री तो रिड्यूस कर दे रहे थे, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट फिगर था कि व्हाट इज द डिमांड, तो अपना इन्वेंट्री उसी हिसाब से रखेंगे, जो भी सामान की जरूरत है उसी हिसाब से लेंगे. तो कॉस्ट एंड ओवरहेड्स तो वो कंट्रोल्ड. कोई इंटरमीडिएटरीज का वो उसी हिसाब से सामान खरीदते थे, जैसा डिमांड उनके पास आता था वो बना के बेचा करते थे.
Through this model, according to Dell, Dell was able to provide its customer the latest available technologies, performance, and superior value of competitive price. That is, they thought that they were giving them the best technology. But since the customers were not able to tell them what exactly they wanted, जब वो किसी और के पास वो ज्यादा अच्छा देख रहे तो naturally they'll be dissatisfied. The old process, their supply chain worked as follows. After a customer places an order either by phone or through the internet on, this was their portal, www.dell.com. Either you through the phone or through this portal. Dell processes the order through financial evaluation and configuration evaluation, which takes 2 to 3 days. तो जब एक बार मिल गया तो क्या उसमें कितना दाम लगेगा और क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मान लीजिए क्या मेमोरी चाहिए, क्या आपका स्पीड चाहिए, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो, this took about 2 to 3 days. After evaluation, it is sent to one of its manufacturing plants. Actually, once they know what the customer wants, they used to send it to the manufacturing plants. These plants would build, test, and package the product in about 8 hours. ऐसा नहीं था कि it was not bad, but still, इतना better players आ गए कि उनका सेल डाउन हो गया. The general rule of production is first in, first out. FIFO जिसको कहते हैं, first in, first out. FIFO. And Dell typically plan to ship all orders no later than 5 days after receipt. ऐसे देखने से तो लग रहा है कि बहुत कम समय में वो कर दे रहे हैं, मगर the competitors were doing it in a better way, तो उनका सेल फिर had dipped. So Dell supply chain now because their sales had gone down, so they saw how to improve this. So they अपने supply chain पर भी वो ज़्यादा focus देके and they reinvented it. तो ऐसा नहीं था कि now the company reinvented its supply chain and shifted to the segmented model that targets several groups of customers with different needs and buying capacity. सब तरह के customers को वो फिर देखने लगे. हो सकता है कोई commercial purpose से ले रहा हो, कोई commercial house हो, कोई personal अपने daily use के लिए रहे, तो उनके सारे तो सभी तरह के they started focusing on each and every group. The company realized the core of brand success in its earlier year was its relationship with customers and ability to hear their needs, and reinvention of their supply chain was mostly on customer relationship. क्योंकि ये relationship से क्या होता है ना, once you have built that relationship, वो relationship थोड़ा उनका had gone down, so they realized they should rebuild it, make it stronger. क्योंकि there's something known as relationship management. आप लोगों ने ये शब्द तो सुना ही होगा. Relationship management, in fact, the person who has developed this whole theory, थोड़ा बहुत तो उनके marketing guru भी करते हैं, but mainly it is done by an Indian who is staying abroad. तो इसमें they have seen it is 5 times more expensive to get a new customer. जो पुराने आपका यदि relationship अच्छा है, तो relationship की वजह से वो आपके पास बार-बार आएंगे. So they started focusing more on customer relationships.
to reconstruct its supply chain, the company implemented the following solutions. तो अब वो they started looking at the whole globe. ये नहीं कि एक रीजन में ही वो अपने आप को सीमित कर दे, because with the opening of the economies plus with the invention of information technology and the web, now it has become a global village, global structure instead of regional structure, with 3 business units: enterprise, public and consumer, small businesses. So at the beginning only I had said they had started looking at all the types of customers, whether it is an enterprise, whether it is public, or whether it is a small business or a single consumer. उनके लिए सभी अब इम्पोर्टेंट हो गए. Standardized offers including the most frequently purchased configuration. तो उस डेटा से उनको ये पता चला कि सबसे ज्यादा क्या चीज का डिमांड है, सब उस पर ज्यादा वो फोकस करने लगे. अब सेगमेंटेड मॉडल्स, जिसको जैसा पसंद है उसके हिसाब से वो बनने लगा. ये नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल मॉडल्स. Infrastructure that corresponds to the changing needs of the business. अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरह वो चेंज करने लगे, क्योंकि it has to be flexible and it should be proactive. What is the need of the business? What do they want? What will be selling will be easier to satisfy them. Standard yet flexible process that leverage global partnerships. Standardized तो था, ये नहीं था कि कहीं कुछ ऐसा नहीं, but there has to be some flexibility within it. जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से वो चीज को बनाया जा सके. और as I said कि now they were not confined to a regional area, but to the whole globe. Customers' priorities aligned according to speed, choice and cost. Actually, अब किसी को बहुत ज़्यादा speed की ज़रूरत है, choice is what all features they want in their laptop and what cost they are willing to pay. तो उस हिसाब से वो बनने लगा. Actually, somebody is willing to pay higher cost, तो ठीक है, उनको पहले जाएगा, जो थोड़ा कम देंगे वो थोड़ा बाद में जाएगा. तो वो प्रायोरिटी उस तरह से अपना बिल्डअप करने लगे. रेडीमेड इन स्टॉक सिस्टम पुट विद डिलीवरी, और कुछ रेडीमेड भी रखे, इन स्टॉक भी रखे कि जरूरत पड़े तो फटाफट भेज दिया जाए. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर था आईटी का, किस तरह का होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर, अपने जैसे उनके अपने मैन्युफैक्चरर से कैसा रिलेशनशिप है, उनके लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करे. तो कि मान लीजिए आपने सामान तो टाइम पर बना दिया, बट टाइम पर वो डिलीवर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द लॉजिस्टिक्स. तो यू हैव टू सी टू ऑल द पार्टनर्स कि उनके it is the final delivery which counts. Even if it is the delivery is very good, but it is not delivered in time, and also in the shape and quality which the consumer wants. जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है कि एक पहले क्या होता था ना, प्लेज जो होते थे, ड्रामा, तो लास्ट में सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आके स्टेज पर खड़े हो जाते थे, एकदम स्टैंड स्टिल, और फिर वो कर्टन ड्रॉ किया जाता था. अब एक बार ऐसा हुआ कि वो खड़े, अब स्टैंड स्टिल कितनी देर के लिए खड़े होंगे, 1 मिनट के लिए. अब उसी में कर्टन ड्रॉ, अब कर्टन यदि नहीं पुल हुआ तो वो इफेक्ट खराब हो जाएगा.
हालांकि बहुत छोटी सी बात है, तो जो भी कर्टन पुल कर रहा है उसके दैट पर्सन डजंट हैव टू डू अ वेरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट टाइमिंग मैटर्स अ लॉट. तो यहाँ पर वो they started looking at all the features which should be present in their organization so that they can meet the customers' demand in time according to their wishes. तो डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कुछ कस्टमर्स को आप खो देंगे. यदि सप्लाई कम है, सॉरी, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो यू विल बी वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी. कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है. तो ये बैलेंस को बना के रखना बहुत जरूरी है. इसीलिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं फोरकास्टिंग का. डेटा, तो आजकल डेटा साइंस इतना पॉपुलर है, इसीलिए कि विद दीज टेक्निक्स वी कैन फाइंड आउट कि पुराने जो डेटा है उनको करके आप एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिमांड इन फ्यूचर, सो दैट यू मेक द थिंग अकॉर्डिंगली. Dell maintained a database to track the purchasing patterns of corporate customers and their budget cycles in order to forecast demand. क्योंकि ये बड़े सबसे बड़ा वाला तो यही हुआ कॉर्पोरेट कस्टमर्स, तो उनका क्या बजट साइकिल है, भाई जैसा बजट रहेगा उसी हिसाब से सामान खरीदेंगे. तो दे मेंटेन अ डेटाबेस. जैसे आज आप किसी भी शॉप में जाइए, दे नोट डाउन योर मोबाइल नंबर, आपका डेटा बेस उनके पास तैयार रहता है, इसलिए एनीथिंग न्यू कम्स you immediately get a message. The privacy of data could be, there's so many times it is being violated. They know everything about you, what you like, when you purchase, what is your earning capacity, how much you are spending. अब देखिए, अब बहुत सारे यदि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगेंगे, क्योंकि they keep a track of these things. अपने कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, उनके परचेसिंग पावर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है. हो सकता है आपका परचेसिंग पावर, अगर आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है शॉपिंग करने में, तो there are people who are very much involved in that, so they'll try to capture this. So everything about their future customers, present customers, they keep a track of it. Accordingly, they'll be able to capture them and sell their product to them. They'll maintain a database to track the purchasing patterns of corporate customers and their budget cycles in order to forecast demand. It also maintained a similar database for individual customers in order to cater to their future requirements for PCs. अब ये नहीं है, as I told you, कि segmented कर दिए थे. They were looking at both at the corporate customers, individual customers, small villages, as small businesses. So this way they could cater to every segment. ये नहीं कि they were only confined to one segment. For them, the whole globe was their market, and every type of customer was welcomed by them. They were looking at each and every type of customer. So they had to have data about everyone, whether the customer was a corporate or whether they're an individual customer or a small business or a small company, whatever, wherever. Through forecasting techniques, Dell was able to forecast demand with 75% accuracy. 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है. Again, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि they can predict the future, वो कोई 100% नहीं कर सकता है. वो भी अपना कुछ साइंस, उनका भी वैदिक साइंस है, लगाते हैं, करते हैं, पर 100% कोई नहीं कर सकता है.
So here also they use statistics to do the forecasting, but it is up till 75% it is accurate. 75% means कि 100 टाइम करेंगे तो उसमें 75 टाइम्स करेक्ट होगा. Statistics means for a long term. ये नहीं है कि हर एक बार होगा. और 100 टाइम्स आप करेंगे तो 75 टाइम्स तो होगा ऐसा ही. So that is why today's statistics has become so much important, because whether you are working in say supply chain management, whether you're working in hospital also, how to satisfy the demand of the patients, वहाँ भी यूज करते हैं. आप जैसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें आप कौन सा पैटर्न फिट करेगा. उसी पैटर्न को देखते हुए यू कैन मेक द फ्यूचर फोरकास्टिंग. Thrice a day, the changing demand patterns were communicated to the major suppliers. जैसे अब क्या डिमांड का पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो ये the information has to be sent to the supplier, जो उनके मेजर सप्लायर, क्योंकि बनाने वाले तो वही हैं, उनको यदि पता ही नहीं होगा. That is why when I was talking about the 7 features of a supply chain management, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन. जैसे आपने तो भेज दिया, सप्लायर ने कोऑपरेट नहीं किया, नहीं बनाया, तो कोऑपरेशन तो होना चाहिए ना. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड सेम गोल. आप कहीं भी हो उस सप्लाई चेन में, और मेन है फाइनली टू सैटिस्फाई द कस्टमर. और जो भी रिवॉर्ड्स और रिस्क है सबको शेयर करना है. Then managing the inventory, whether it is finished good, work in progress good or raw material. इन्वेंट्री का यही करना है कि ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं. आपका प्रोडक्शन रुके भी नहीं और आपका ऐसा नहीं हो कि जो भी परचेज आपने किया वेस्ट जा रहा. Even for our house we do inventory. When we buy things for the whole month, actually there's so many things which we buy for the whole month, so we have to study what is the demand pattern of the family, what things are needed, how much is needed, and accordingly you do the purchasing. तो ऐसा कुछ नहीं है, even a company does that. What things should be purchased, when it should be purchased, where it has to be stored, क्योंकि स्टोरिंग में भी तो कॉस्ट लगता है. जैसे आप बहुत ओवर परचेज कर लिए तो आप उसको स्टोर अच्छे से नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, वो वेस्ट. ऐसा थोड़ी है कि अभी ठीक है कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे नट एंड बोल्ट्स है, वो तो ऐसे भी पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा जनरली, तो उसमें उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है. इसलिए इन्वेंट्री में व्हाट वी डू इज एबीसी एनालिसिस. एबीसी में 3 कैटेगरी में कर देते हैं. जो बहुत कॉस्टली है वो थोड़े ही यूज होते हैं, जो मिडिल के हैं और जो छोटे नीचे जो है वो है चीपर बट उनके क्वांटिटी ज्यादा होते हैं. Dell has a long-term relationship with suppliers that help the brand streamline their inventory management as well. अब बिना वो एक हमने फीचर में ये चीज पर बहुत हार्प किया था कि there should be a long-term relationship. It is not a one-time relationship. जब तक आपका काम चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं होगा. You have to maintain that relationship. The company considers its vendors to be an integral part of its success. जो जो बातें हमने फीचर्स में 7 पॉइंट्स दिया था पिछले संडे को,
So they have incorporated them, and that is why today they are more successful. 2006 में वो थोड़ा डाउनफॉल देखे थे क्योंकि शुरू आए थे तो उतना कंपटीशन नहीं था, तो धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया. तो they have to follow these features of supply chain management so that they are successful in the marketplace. The company considers its vendors to be an integral part of its success. Vendors में दोनों हो सकते हैं, people who are seller जो रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं और जो फिनिश गुड को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जो भी हैं, तो they are also an integral part of the supply chain management. They are not separate. So they should also feel the belongingness. That is very important. As an operation manager, you have to see that each and every employee should feel that he or she is a part of the organization. ये नहीं है कि हर एक and importance of each and every employee. Vendor हो, जैसे यहाँ we are talking about supply chain management. Vendors हो, manufacturer हो, everyone has a significant role to play in the proper functioning of the supply chain. The key objective of Dell's inventory management is to minimize the inventory and optimize the production speed. इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि optimize. We are talking about not optimizing means the best. There are so many techniques. When we talk about operations research, we talk about optimization. Optimization can be maximization and or minimization. जैसे cost को हम लोग minimize करते हैं और profit को maximize करते हैं, तो what will be the optimum profit? कि यहाँ speed को क्या optimum होना चाहिए? इतना जल्दी भी नहीं कि अभी supplier को consumer को चाहिए नहीं, आपने भेज दिया, और इतना देर भी नहीं होना चाहिए कि वो wait कर रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं सामान. तो optimum speed. Production क्या एक speed optimum होना चाहिए. As a result, the company does hold inventory for more than 6 days and avoids unnecessary cost. So holding time is about 6 days. So इससे उसका cost कम होता है, and actually it is reflected on the cost of the product, which if the consumer is getting the product at a cheaper cost and a good quality, so naturally the customer will be interested in that product. The retail giant has got suppliers from all over the world, including major companies such as Motorola, Samsung, Sony, and more. So it has now become a global player. It's not, this is Samsung Korea का हो गया, Sony Japan का हो गया, Motorola US का हो गया. So it is playing globally now. All of them supply the components according to a set of rules provided by the Dell. For example, it is strongly advised that each supplier must have a manufacturing plant near Dell's plant. अब थोड़ा डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा ना, कि ऐसा नहीं अब जहाँ डेल का प्लांट है उसी के आस-पास वो अपना मैन्युफैक्चरर भी अपना प्लांट हो सकता है. डेल का जैसे आप उसके कोई कस्टमर है जो एक्स पोर्शन ऑफ ग्लोब पे है, तो वो वहां से आपको सप्लाई करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऑर्डर ऑनलाइन, पहले क्या था, ज्यादातर बिग सिटीज में ही इनके वेयर हाउसेस थे. अब वो टायर 1, 2, 3 सिटीज में भी खोल लिए हैं, इसीलिए उनका सप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है. विद इन 2 or 3 days इट कम्स. तब शुरू आज से करीब 10 साल पहले ये नहीं होता था. इफ यू आर इन दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, तब तो बहुत जल्दी आ जाता था. बट लाइक प्लेस लाइक वाराणसी, यहाँ सामान पहुंचने में बहुत टाइम लगता था.
Then they have now opened their warehouses all over India. Even in smaller cities, they have opened it. So now so similarly in Dell also they wanted their manufacturing plant to be near their plant. And their presence was also global, their supply was also global, and their customers were also global. The supplier should also cooperate with logistics companies that can both deliver the component and ship the customer orders. सारे पार्टनर्स जो है, लॉजिस्टिक कंपनी भी उसके पार्टनर है, अपने सामान बना दिया मगर वो सामान टाइम पर नहीं पहुंचाया तो फिर क्या होगा, क्या फायदा है? And so it has to work in an integrated manner. क्योंकि that is why वो जो लास्ट जो कंज्यूमर है उसी पर फोकस होना चाहिए. The supplier should also cooperate with logistics companies that can both deliver the component and ship the customer orders. Components भी लाके देना है, डिफरेंट जैसे मोटरोला से, सैमसंग से, सोनी से लाके डेल के एक मैन्युफैक्चरर को, फिर वहां से फिर जब फिनिश हो गया तो फिर डेल कंपनी से फिर कंज्यूमर के पास जाना है. तो दोनों तरफ है, एज आई टॉक अबाउट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. जो लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है, मैन्युफैक्चरर से बाहर जा रहा है, तो दोनों लॉजिस्टिक्स को आपको मेंटेन करके रखना है. Finally, the company manages its inventory based on VMI model, meaning the supplied components are kept in the truck only and taken as needed, while the vendor manages the inventory. VMI vendor management inventory model. तो vendor manages the inventory और ट्रक में उतना ही सामान है जो आपको जरूरत है. Communication is very important. Dell and its suppliers communicate with each other via an internal website called value chain. मैम इंटरनल वेबसाइट में क्या क्या आएगा? क्या इंटरनल वेबसाइट में क्या क्या आएगा? जैसे कोई एग्जांपल. इंटरनेट का दो चीज पता रहता है, एक एक्स्ट्रानेट कहते हैं, एक तो जैसे एक यूनिवर्सिटी है तो इट हैज आल्सो गॉट टू टेक्नोलॉजी, वही इंटरनेट वाला ही टेक्नोलॉजी यूज होता है, बट वन इज फॉर द इंटरनल वर्क and one is for the external also. तो यहाँ पर जो है इंटरनल वेबसाइट का मतलब कि जो उस जॉब से कनेक्टेड हो, कंज्यूमर नहीं. मैम इसको सप्लायर है, जो वेंडर है, जो के लॉजिस्टिक कंपनी है, तो दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सामान कहाँ कैसे पहुंचा, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इन्वेंट्री किस हद तक है, कम है, बेसी है, जो भी है, तो दे हैव टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. जैसे पूरा ये सप्लाई चेन है ना, या फोकस तो एक ही है, कस्टमर, और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? यस मैम, समझिए जैसे उनके अपने मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद फिर कस्टमर तक उसको कैसे पहुंचाना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया और बाकी चीजें, तो वो आपका एक्सटर्नल में आ जाएगा. कैसे कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, यस मैम, के थ्रू, तो उनको उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फीचर्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. यस या आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे. थैंक यू मैम.
At this website, the companies can access information about inventory status within the supply chain as well as get demand and production data. वो N एक छूट गया है. Get demand and production data. दोनों चीज. Information about everything कि इन्वेंट्री में भी कितना सामान है और क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या डिमांड है, कितना चीज प्रोड्यूस हो गया. So all this information has to be communicated with each other. आउटकम क्या हुआ, इतना सारा रीइन्वेंशन उन लोगों ने अपना सप्लाई चेन में किया, मैनेजमेंट में इतना, तो उसका आउटकम क्या हुआ. Dell has been a successful player in the computer hardware market since the very beginning because of its supply chain strategies. Despite the hard times in early 2000, its customer-centric helped remain afloat. So customer-centric. जैसे अभी हमने क्या कहना है, आपको हर एक को कहने को कह देते हैं कि कस्टमर इज द किंग, बट यू हैव टू मेक द पर्सन. ये नहीं कि जब तक आपको सामान बेचना है तब तक आप एकदम उसके आगे पीछे घूमते रहे, एक बार बेच दिए तो बस भूल जाइए. दैट इज नॉट कस्टमर सेंट्रिक. दैट रिलेशनशिप हैज टू बी बिल्ट. अर्ली 2000 it's customer centric, help remain afloat. In 2010, the retailer reinvented its supply chain according to the changing needs of its target audience. Target audience, ये target भी सबको बना दिए ना, खाली एक पर नहीं रहे, अलग अलग target हो गया. The company, the individuals, the small business, सबको बना दिया और उस अलग अलग ग्रुप हो गया जो इन लोगों पर इनके क्या क्या डिमांड्स है, क्या इनके रिक्वायरमेंट्स है, कब भेजना है, कैसा भेजना है, सारा. और ये तो द टारगेट ऑडियंस को अपने दिमाग में रखें. तो दे बिकम वेरी कस्टमर सेंट्रिक. By renewing and improving one's supply chain strategy continuously can go a long way. So, ये supply chain भी you have to be aware कि what is the dynamics, what is how the ecosystem is moving. You have to move accordingly. ये नहीं है कि जो काम हम पहले से करते आ रहे बस वैसे ही करते जाएंगे. Maybe in past you were successful, but if things have changed, you have to change accordingly. You have to move along the time. What is the demand of the time? What is the technology, latest technology? What the customer wants? What your competitors are doing? So in सबके लिए you need data, and this data has to be processed and communicated to everyone, each partner of the supply chain. Then only the final customer, the final for whom all these things are being done will be satisfied. Keeping that focus in mind. Supplier, customer orders, manufacturing, ये internal है इनका. ये internal है. Customer orders taken by internet or phone, manufacturing, storing, merging, customer के पास में चला गया, from supplier to customer. ये Dell का supply chain है. Supply chain integrates all these features such as manufacturer, supplier, transport, wholesalers, retailers, customers, and all other elements which link the above. Its main objective is to fulfill customer demands by adding value to the product and services.
You have any questions? नो मैम, सब कुछ ठीक है, क्लियर है। आज थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ। मेरे भी सर में ना अभी थोड़े दिन पहले चोट लग गई थी। थोड़ा कभी ओके मैम, टेक केयर। Because now अलग-अलग part is I'm not doing that because I'm not taking the whole course at present. I'm just giving you an overview of what is operations management. Operations management is part of supply chain. क्योंकि supply chain जब कैसे करोगे जब तक कुछ को बनाओगे नहीं, कोई भी चीज हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो पार्ट ऑपरेशन का होगा। कैसे बनाओगे, तो मैन्युफैक्चरर जो करते हैं, मगर supply chain is the everything, right from the raw material to the customer. It is a, ये तो एक Dell computer है, लैपटॉप है, it can be anything, it can be your insurance, it can be your education, it can be a hospital में भी है। मान लीजिए आप या तो इन पेशेंट है या आउटडोर पेशेंट है, तो you whatever they are looking for, I'll show you a photograph. Can you see this photograph? या हम शेयर करें? नो मैम। अभी पिछली वाली स्लाइड ही है प्रेजेंट। दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। 1 second.
Now can you say it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे एक इनपेशेंट फ्लो इनफ्लो है, पहले तो रजिस्ट्रेशन हुआ, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या तो यू हैव गॉट हेल्थ इंश्योरेंस फुल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपको पेमेंट भी करना है, either it will be through your insurance और डायरेक्ट भी कर सकते हो, एडवांस फी कलेक्शन. अब whether you go to a public hospital or a private hospital, process is the same, the amount will vary. फिर बेड अलॉटमेंट हुआ, इनपेशेंट है तो देन व्हाट, इन्वेस्टिगेशन है तो डायग्नोसिस होगा, इट विल गो टू डिफरेंट लेबोरेटरीज, जो भी उनका ब्लड टेस्ट करना है, एक्सरे करना, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है. फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, once it has been done, मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट भी होगा तो क्लिनिकल यू आर डिस्चार्ज. देन फाइनल बिलिंग, पहले तो एडवांस बिलिंग हो सकता है, कुछ पैसे रह गए हैं उन्हें भी दे के खत्म करना, देन ओनली यू आर फाइनली डिस्चार्ज. So this is a flow of here it is an inpatient, it can be outpatient also. रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, यही है कि बेड अलॉटमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन तो होगा, डायग्नोज होगा तो ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएंगे, उनको जो भी ट्रीटमेंट देंगे, और फाइनली दैट पेशेंट विल बी डिस्चार्ज. तो एक पेशेंट में यहाँ ये उनका ऑपरेशन है, ये एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्जिकल ऑपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क दे आर डूइंग. जो यहाँ पर एक मरीज आया, उसको स्वस्थ करके बाहर भेजना है, वैल्यू एडिशन हुआ, तो दिस इज द ऑपरेशन. बट टू डू दिस ऑपरेशन स्मूथली, they need that there should be cooperation and information flow among the different entities which are playing, whether they are not nurses, doctors, paramedicals, administrators, whoever is involved. इनका पूरा joint effort से नहीं हो सकता है, बिना इनके सबके joint effort से ही वो जो भी पेशेंट आया उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, and finally he or she is cured and he leaves the hospital. So for this, the total effort of anyone who is involved in taking care of the hospital and its staff, its patient, is required. वो nurses हो, paramedicals हो, administration हो, जो भी. So this is just an operation. That is the work which they are doing. But to achieve this, proper supply chain management is required. उनके जो drugs आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, जो medical equipment आ रहे हैं, उसकी inventory क्या है, समय पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सारे कुछ. So for this, a proper supply chain is required anywhere. Whether you are in service industry, whether you are in manufacturing industry, whether whatever is your work, your operation यहाँ hospital है तो
आपको पेशेंट को ठीक करना है, कहीं आप इंश्योरेंस है तो आपको इंश्योरेंस लेना है, उससे आपको कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो यू आर adding value to the student who has entered, things like that. If it is a manufacturing, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, क्या आप कार ले रहे हैं या आप कुछ और ले रहे हैं, जो भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो दैट इज द ऑपरेशन, क्या वो बना रहा है, वो क्या बेच रहा है, बट टू फुलफिल दैट total supply chain management is required. Any other question? No, ma'am. Yes, ma'am. Operation management is the overall coordination of process required for the creation and distribution of products and services. यहाँ तो healthcare का हमने लिया है, you can take anything. जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो कहाँ लगाएंगे, उसका क्या लेआउट होगा, ये सारे चीज डिसाइड करने पड़ते हैं। Do you have any other questions or should we say? No, ma'am, clear. Because it is, I'm just giving a glimpse. अब इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का है तो प्लांट कैसा होगा, किस तरह का लेआउट होगा, कहाँ पर लोकेशन होगा, ऑप्टिमम हो, जो should be in between the manufacturer and the customer, क्योंकि फाइनली तो कस्टमर के पास ही जाएगा सामान। किस तरह का प्रोडक्ट लेआउट होगा, कि ये असेंबली लाइन लेआउट होगा, सब देखना पड़ता है, किस तरह का प्रोडक्ट है, तो ये सारे डिटेल्स हम लोग उसमें पढ़ते हैं जब ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जब ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फिर कौन से टेक्निक यूज करेंगे फोरकास्टिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए दोनों हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, प्लस taking the views of experts in that field. He expert है, whether he is the person who has been working there for a number of years or anyone, जो सेल्स पर्सन है, ज्यादा डिटेल में तब जाएंगे when we are doing the full course on operations and supply chain management. Okay, ma'am. Okay. If anyone of you interested in doing that course, then you can talk to Mr. Dheeraj Shrestha or your friend or anyone. Okay, good night. Thank you, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Thank you, night. ma'am. Take care.